As urban centers often take the spotlight of innovation and technology, but today we have someone from Grassroot, Mr. Sanjay Tilwa ji, sharing his experience on the rural impact, rural innovation. So, hello everyone, I'm Gajendra Tripathi. Along with me, I have Rama from Suzuki Motor Corp and Sanjay Tilwa. So, without much delay, we'll just begin with third podcast of Suzuki Motor Corp. So, Rama, happy to have you here. Could you please introduce yourself? Just brief about what you do at SIC, your background. Yeah. Thank you, Gajendra. Thank you for hosting. Thank you for having us in this podcast. Thanks to T-Hub. So I am Rama. We work with Suzuki Innovation Centre. Suzuki Innovation Centre is a platform which is created in association with Suzuki Motor Corp Japan and IIT Hyderabad. So it's a collaborative project among, it's like academia industry collaboration between Indo-Japan. So that is how SAC started, and I am working exclusively for a project called GRIPP. So that is Grassroots Innovation Pilot Project. So this project is led by Pratyusha, and Pratyusha and I are working in this project since last 1 year. So this project, Project GRIPP is basically the idea behind this project is to scale up the grassroots entrepreneurs. So as Gajendra rightly mentioned, we have like a lot of innovation scope for urban setups, but that there is a gap which we could find in the rural setups. So that is how the GRIPP has started. So the basic objective of the GRIPP is to scale up the grassroots innovation business by providing like all the facilities kind of in tuning of their technology, maybe the business support or the mentoring support along with the working capital. So that is how the GRIPP started. Thank you. Thanks for the intro, Rama. So, नमस्ते संजय जी. नमस्ते सर. आपकी जर्नी के बारे में सुन के काफी अच्छा लगा, बट आपका बैकग्राउंड क्या है, आपने कैसे शुरुआत की, अगर इस सब के बारे में थोड़ा हमको ब्रीफ कीजिएगा. जी सर, मेरा नाम संजय टिलवा है और मेरे पापा फार्मर है और मेरा एक छोटा सा विलेज है गुजरात में, जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में, एक जापोदड़ गांव करके. जो छोटा सा विलेज से मैं वहां से बिलोंग करता था. और मेरे पापा और हमारा पूरा फैमिली, मेरे पापा वैसे प्राइमरी टीचर थे बट बेसिकली बैकग्राउंड उसका फार्मिंग था. तो अभी भी मेरे पापा 80 to 83 ईयर्स में फार्मिंग का काम कर रहे हैं. और मैं राजकोट सिटी में हूँ. मेरा डेवलपिंग मशीन में मैंने ग्राउंडनट डिगर का इनोवेशन किया था, जो मूंगफली निकालने के लिए मशीन है, जो जमीन में से निकालने के बाद उसको वाइब्रेटर से मिट्टी अलग करके पीछे एक रो बनाता है. मतलब 2 लाइन से लेकर एक साथ 15 लाइन तक वो एक साथ हार्वेस्ट करके एक रो बना देता है. वो मेरा एक इनोवेशन था. इसकी शुरुआत आपने कैसे की, स्टार्ट कैसे किया आपने? स्टार्ट में सर ऐसा है, 2007 में मेरे दिमाग में एक आइडिया आया था कि एक ग्राउंड नट के लिए कुछ मशीन होना चाहिए. हमारे दोनों खेत, मेरा 2 खेत है, दोनों खेत में हम ग्राउंड नट उगाते हैं. बट वो जो हार्वेस्टिंग का समय आता है ना, उसी टाइम पे बहुत धूप होती है. यहाँ पे टेम्परेचर करीबन 40 to 43 डिग्री तक का टेम्परेचर होता है. वो टाइम पे खेत में काम करना भी बहुत मुश्किल है. और वो टाइम में कभी कभी बारिश भी आ जाती है. तो वो ग्राउंड नट हाथ से निकालना वो धूप में, और उसके बाद उसको ड्राई करना होता है. तो छोटे छोटे बंच बना के बाद में वो ड्राई होता है खुले खेत. तो जो हार्वेस्टिंग का टाइम था, उसी टाइम पे बारिश भी बहुत गिरती थी. वो जो बंच बनाते उसके नीचे सांप वगैरह सब रखते थे, कभी भी उसको उठाने जाओ तो सांप लग जाता था. वैसे एक टाइम हमारे खेत में बहुत ही दिक्कत वाला बारिश हुआ एक खेत. तो इतना बारिश हुआ कि वहां से मूंगफली जो थ्रेसिंग करना था वो कर नहीं पाया. बाद में उसको पूरा ट्रैक्टर में भर के एक खेतर से दूसरे खेतर में डाला और पूरा हाथ से निकाला. तो उसमें मेरे पापा ने मुझे भी साथ में लिया था कि ये मेहनत करना है आप सबको को, और यहाँ पे मूंगफली भी उतनी होगी नहीं, जितना हमने खर्चा किया उतना आउटपुट भी नहीं निकलेगा. तो उसी टाइम से मुझे ऐसा लगा था कि ये इतनी परेशानी इसमें जो हो रही है, तो कुछ ना कुछ तो इसके पीछे मशीन बननी चाहिए. तब मैंने एक मशीन नया डेवलप किया था उसी टाइम पे 2007-8. तो तब ये दिमाग में मेरा आइडिया है. तो ये मशीन आपने खुद डेवलप की, क्योंकि आप तो टेक बैकग्राउंड या फिर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते नहीं हो, नहीं तो सर, वो चीज़ कैसे आई? थोड़ा बहुत हेल्प मुझे मेरे बड़े भाई ने किया था. ठीक है, तो वो हेल्पिंग थी. एक दो मेरे फ्रेंड थे, सबका सजेशन था. और बाद में अच्छा सजेशन मुझे हमारे जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वहां से मिला. तो वैसे हमने कंप्लीट कर लिया था वहां से. ठीक है. Rama, getting back to you, right? So, how did you identify someone like Sanjay ji? Yes. How did you get them into the program? Can you just share that experience? Yes.
So not just Sanjay ji, we also have another 5 entrepreneurs, grassroots entrepreneurs, whom we have hired for this first cohort in the GRIPP program. So there is an organization called GIAN, Gujrat Grassroot Innovation Augmentation Network. Most of you might already heard of Professor Anil Gupta. He's the founder of this GIAN organization. So though they have a database of about 10,000 grassroots entrepreneurs, and among us, those 10,000, we have got the list of 70 high impact grassroots entrepreneurs who has like larger impact in the rural areas. And out of 70, again, we have shortlisted it to 20. And based on online and few of the offline interactions, we have like shortlisted the 6 startups as the first cohort for the GRIPP program. And that is how we could find Sanjay ji as well. Great. संजय जी, जब आपने शुरुआत की, राइट, आपने आपका ऑलरेडी प्रीवियस जॉब था, जहाँ तक मैं जानता हूँ, आप वो जॉब छोड़ के ये चीज स्टार्ट करने की कोशिश की, तो इनिशियल फेज में चैलेंजेस बहुत आते हैं, कभी घर वाले नहीं मानते हैं, कभी आपके दूसरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं, वो छोड़ के छोटे से शहर से ये शुरुआत करना, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? सर, स्टार्टिंग में जब मैंने मशीन बनाई ना, तब पहली बार एक मशीन बनाई, वो ट्रायल करने के लिए मेरे पापा ने खुद ने मना कर दिया था कि नहीं, ये खेत पे ट्रायल मत कर, ये मूंगफली बिगाड़ता है, वो करेगा वो करेगा। बाद में पहचान वाले के 2-3 जगह गया, एक ने थोड़ा बहुत चलाने दिया, ट्रायल नहीं करने दिया, ठीक है। तो वो स्ट्रगल तो स्टार्टिंग में बहुत रहता था, बट एक बार तो मैंने छोड़ भी दिया था, 1 साल ऐसे ही चला गया कि चलो छोड़ दो, ये कुछ काम का नहीं। वापस ऐसा लगा कि नहीं, वापस करना है, तो 1 साल जाने के बाद वापस उसको लिया। और बाद में जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने, सर लोगों ने वहां से मुझे एक फार्म छोटा सा यहाँ स्वामीनारायण मंदिर का दिया कि वहाँ स्वामी को मैं बोल देता हूँ, वहां पे मशीन लेके जाओ, वहां पे वो चलाने देंगे। बाद में वहां पे चलाया और धीरे धीरे वो मशीन मेरा कंप्लीट हुआ। जो जो चेंजेस था वो यूनिवर्सिटी ने भी सजेस्ट किया, उस हिसाब से हमने आगे ये मशीन कंप्लीट किया है। और आपको ये प्रोग्राम के बारे में कैसे पता चला? ग्रिप सुजुकी इनोवेशन सेंटर के बारे में कैसे पता चला? आपने कैसे अप्लाई किया? सर, मेरा प्रोफेसर अनिल गुप्ता जो ज्ञान से है, ग्रासरूट इनोवेशन ऑगमेंट नेटवर्क अहमदाबाद में, उसके साथ लास्ट 10 साल से कनेक्शन में हूँ। वो लोगों ने मुझे 2010 में जूनागढ़ से लिया था, और तब एनआईएफ में सर वर्किंग कर रहे थे साथ में। तो उसके बाद मेरा कॉन्टेक्ट ज्ञान से है, और सुजुकी इनोवेशन सेंटर और ज्ञान का जो प्रोजेक्ट है उसमें मेरा शामिल हूँ ना, वो भी मुझे एक बहुत खुशी है कि वहां से मुझे सिलेक्ट करके और इन लोगों ने मुझे हैदराबाद तक पहुंचाया। अच्छा. So Rama, what were the initial challenges for you guys to implement this at grassroots, right? So let's say when we talk about innovation, when we talk about technology, to do it in Bangalore, Hyderabad, Delhi, it's very easy, right? But when you want to implement something at grassroots level, you'll find a lot of challenges. So as Suzuki Innovation Centre, what were these challenges and how did you guys encounter it? Yes, you're very right. It's not like any kind of deep tech projects. They're all the grassroots projects. So to put it like very honest, GIAN is the organization which helped us in the sourcing. Otherwise, it would have been really tough for us to source the innovations itself. So GIAN has the support we have received from GIAN in sourcing was like crucial, which we could say, and that made our work a little easy. And but even then, after sourcing the 70 high impact innovations, we have only the scope of 6 startups to identify. So the selection criteria was itself also a challenge for us, because from 70 to shortlist of 6 is also was not so as easy as we expected. Because for these kind of grassroots innovations, we have to practically go meet the grassroots entrepreneurs. Only then we can come to a conclusion whether they have the coachability, whether they have this entrepreneurship ability or not. So for which we had to like travel across the like nation, like from north, we have like multiple 70 innovations were like across the globe, across the nation. So to shortlist and to do the selection process was also a bit of challenge. And then even after the selection process, to make them like a cohort, like the larger like accelerator programs, to start with an acceleration program to find out an objective or the KPI for the whole program was also tough, because individual grassroots innovator, like they are different from like one grassroots innovator is so different from another person, so their objectives and KPIs also don't match most of the times. Even the 6 startups, they individually have their own objectives, their own KPIs, so we have to build KPIs and objectives for each entrepreneur separately. It's like a case to case thing. It's not like we set up one acceleration program and it will go for everyone. It doesn't work out like that. Right. In innovations. So yeah, these are all the initial challenges we faced. Right.
Okay. Thanks for giving that overview. How did you guys start and how is it going? And Yeah. I mean, I've heard a lot about GRIPP, the kind of innovation you guys are doing. You're helping all this rural innovation, right? So it's a great thing. So संजय जी, आपसे एक सवाल और था मेरा, अब जो जी कि काफी बहुत सारे फाउंडर्स फेस करते हैं, राइट? आपको इनिशियली चैलेंजेस इतने आते हैं कि आपके पास पैसे भी नहीं होते हैं। आपको ऐसे टेक्नोलॉजी तो चलो आपको समझ गया है कि आपको ग्राउंडनट हार्वेस्टिंग के लिए कुछ बनाना है, बट जब पैसे की बात आती है, फंडिंग की बात आती है, या फिर फैमिली की सपोर्ट के बारे में होता है, तो कोई करता नहीं है। क्योंकि आप खुद नौकरी कर रहे थे, यू वर्किंग इन फोक्स मार्शल, आप वहां से हट के फिर ये करने की शुरुआत की। तो यहाँ पे क्या चैलेंजेस रहे थे आपके इनिशियली? सर, स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट किया था तो पहली बार हमारे पास एक 7-8 लाख रुपए का थोड़ा अमाउंट था। वो स्टार्टिंग में हमने डाला। ठीक है, तो उसमें हमने 2-3 मशीन कंप्लीट किया था। 2-3 मशीन में एक भी मशीन हम सेल नहीं कर पाए थे, क्योंकि स्टार्टिंग में कोई उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं था। तो जितना भी पैसा था वो चला गया। तो बाद में क्या करें, बाद में वो रेंट था फैक्ट्री का और 1-2 वर्कर थे, हमारा खर्चा सब खाने पीने का। तो जितने पैसे थे वो चले गए। बाद में वो बंद कर दिया, क्योंकि वो फैक्ट्री का रेंट वेंट सब ऊपर आ गया था। तो बंद करने के बाद 1 साल हम वापस गांव चले गए, वहां पे थोड़ा बहुत काम किया और छोटे छोटे मशीन बनाते थे, वहां दूसरा कोई वैसा किया। तो उसके बाद मेरा एक रिलेटिव था, उसने बताया कि मैं तुझे पैसे दे रहा हूँ और हम पार्टनरशिप में काम करेंगे, तू वापस चल राजकोट में कर। तो वापस जूनागढ़ से मैं राजकोट आ गया और उसने मुझे 25 लाख रुपया वो टाइम पे दिया। 2012 की बात कर रहा हूँ, 12-13 में। तो उसके बाद हमने यहाँ पे एक रेंट पे छोटा सा फैक्ट्री रखा और वहां पे बनाने का स्टार्ट किया। तो ये स्टार्टिंग लेवल का जो स्ट्रगल है वो फाइनेंशियल बहुत है। पहले साल में हमने सिर्फ 2 मशीन ही बेचा था ग्राउंड डिगर में, जब मैंने बनाने का स्टार्ट किया। तो उसके बाद वापस वही जो पहले आई थी वही सिचुएशन आने वाली थी, मुझे दिख रही थी कि अब 2 मशीन में तो कोई हमारा खर्चा कुछ सर्वाइव होने वाला नहीं था। तो उसके बाद मैंने सोचा कि ये इसके लिए सब वर्कर को काम देना, हमें यहाँ पे टिके रहना, उसके लिए क्या करना चाहिए। तो देखा कि एक लोकल रिवर्सेबल प्लाव करके एक इम्प्लीमेंट जो प्लाविंग काम करता है खेत पे, वो बहुत चलता है और उसका डिमांड भी अच्छा है। तो वो बनाने का स्टार्ट कर दिया। तो जब भी ये ग्राउंडनट डिगर का सीजन खत्म हो जाता है हम प्लाव बना लेते हैं, और जैसे ही प्लाव का सीजन अप्रैल में खत्म होता है तो ग्राउंडनट डिगर चलता है। तो वैसे बाद में मैंने प्लाव चालू कर दिया, तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा काम था। और वो मुझे अभी तक जितना भी खर्चा था वो प्लाव ने मुझे सर्वाइव कर दिया। तो अब ये प्रोडक्ट मैंने पूरा डेवलप कर लिया और मैं यहाँ पे टिक पाया हूँ। और अब तक ऐसे कितने मशीन्स बना के आपने बेचे हैं? सर, मेरा ग्राउंड नट डिगर जो मशीन है अभी तक करीबन 800 के आसपास मशीन चल रहा है। उसमें लोकल यहाँ पे सौराष्ट्र में, गुजरात में भी है, बाद में आपका साउथ का एरिया है वहाँ पे भी बहुत है, थोड़ा बहुत एमपी यूपी की बॉर्डर पे है, और एक्सपोर्ट में भी हमने दिया है मशीन। Ji. So Rama, how did you help Sanjay ji on getting this connections, right? So let's say he built the machine, now he wants to sell it. He wants to take it to other stakeholders. He wants to sell it. So what kind of support did GRIPP provide him to do that? Yes, yes. If we specifically talk about Sanjay ji right now, so we Sanjay ji ka main objective or main when we began the project, so we were taking objectives, like we were trying to identify the gaps with the innovators. So that is when Sanjay ji has told us, like linking with the dealerships or connecting him to the distributors in southern India or in other states, not just in Saurashtra or Gujarat. He wants to expand his business. He wanted to expand his business in southern region as well. So that is what his ask was. So that is when GRIPP has intervened, and we ourselves could find few of the distributors. And we, like our team, has reached few of the distributors in southern India, in Andhra Pradesh, in Telangana, and we could connect few of the dealership with Sanjay ji now, like directly. So we could able to establish the dealership network through GRIPP, and that is how we could directly connect Sanjay ji to these dealerships. So now, not just Sanjay ji, so the connection, the network which we built with the dealerships, it is also helping for the other 5 startups as well. So the ask was from Sanjay ji, but now because we have a huge dealership network with us, so we can also connect the other 5 startups also with, because they're all from agri domain. So in the first cohort, most of the products are like agri domain ka hai. So I think now we got this network thing where we can connect most of the grassroots entrepreneurs directly. So that is one thing. So not just that, for few of the startups, for example, we had a paddy transplanter for which the technological improvement was needed, design improvement was needed. So there we could connect those the kind of startups with the technical support, which is from the IIT Hyderabad or from the industry, the experts, industry experts also. So all these kinds of support was given. So when you support these kind of innovators, right?
So there's a lot of impact on local communities, right? Yes. So how do you see that impact as a GRIP, right? What kind of impact you guys have created? Can you enlighten more on that? Yeah, you're very right, actually. So during the selection criteria also, like when we are choosing the startups also, one of the major criteria was the social impact. So we always wanted, GRIP always kept the social impact as one of the criteria in mind. So for example, with using Sanjay ji ka groundnut digger, there is like, we have done the cost benefit analysis and all. So based on that, what we could understand, if they are using this machinery, there's a lot of scope of reducing the labor cost, which is indirectly benefiting a lot of rural farmers, right? So that is how the income level of the farmer somehow is getting increased. So that is one of the social impact part. And if you're coming to like rice transplanter, for example, say, so there it's like a very laborious and I mean very hectic job to do the transplantation, right? There's like a lot of pressure involved in it. So, but when we mechanize it, when the manual rice transplanter is used, the drudgery part, especially by the women folks, right? So that is been reduced. So that is a kind of we didn't quantify the social impact yet. We are in the process of evaluation of the GRIP, but then we could definitely say there is the social impact with by reducing the drudgery of women farmers. So these kind of social impact points which we have considered. Yes, definitely. There's a lot of impact you guys are creating, right? Yeah. संजय जी, जब इनिशियली आपने रीच आउट किया स्टार्टअप सुजुकी इनोवेशन सेंटर, आपका क्या एक्सपीरियंस था उनके साथ पहली बार बात करके? क्योंकि ज़्यादातर ऐसे एक्सेलेरेटर्स या फिर ऐसे प्रोग्राम्स जो होते हैं, वहाँ पे जो ग्रास रूट वाले इनोवेटर्स होते हैं वो सोचते हैं कि वो हमारे लिए नहीं है, हम उनके साथ बात क्यों कर रहे हैं, अपना धंधा अलग से करेंगे। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? फर्स्ट कॉन्वर्जेशन कैसा रहा? सर, पहली बार हम अहमदाबाद में मिले थे ज्ञान ऑफिस। सुजुकी इनोवेशन सेंटर से पूरी टीम आई थी और मैंने वहाँ मेरा प्रेजेंटेशन दिखाया। ठीक है। तो उसके बाद तो मुझे भी ऐसा लगता था कि तो सिर्फ प्रोजेक्ट होगा, कुछ नहीं होगा आगे। ठीक है। बट एसआईसी से जो मुझे हेल्प मिला है, ठीक है, मैं समझ लो सुजुकी का कार रखता हूँ, स्कूटर रखता हूँ, बट मुझे मालूम नहीं था कि सुजुकी कंपनी मुझे यहाँ से ले जाएगी। ठीक है। तो आज बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला है। रमा मैम ने बहुत हेल्प किया है, प्रत्युषा मैम ने बहुत हेल्प किया है। 2-3 बार मैं हैदराबाद भी जा चुका हूँ। तो कभी सोचा नहीं था वो मुझे सुजुकी से मिल रहा है। मैं वो बता नहीं सकता हूँ, वैसा है। बट अभी शुरुआती में तो ठीक है, बट जब आप ऑलरेडी अब 800 मशीन्स बेच चुके हो, 1000 बेच चुके हो, तो आपका जो अब इम्पैक्ट है लोकल कम्युनिटीज के बीच में, मतलब जब आप स्टार्ट कर रहे होते हैं तो बहुत सारे लोग बोलते हैं आप क्या ही कर रहे हो, हाँ राइट? बट जब आप इतना अच्छा बिजनेस कर चुके हो, इतना फार्मर्स के लिए इतना सॉल्व कर रहे हो ये सब प्रॉब्लम्स, राइट? तो अब आपको कैसे लगता है कि आपने कभी ऐसे सोचा था कि मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, आगे जाके आपका विजन क्या रहेगा, कैसे करोगे? नहीं सर, मैंने जब स्टार्टिंग किया बनाने का तो मैंने कोई मेरा विजन क्लियर नहीं करा था। मेरा विजन एक ही था, फार्मर के यहाँ हमारा मशीन जाना चाहिए, वो कंप्लीटली चलना चाहिए और फार्मर कुछ भी हमारे मशीन से परेशान नहीं होना चाहिए। ठीक है। तब उसको पता चलेगा कि ये मशीन क्या क्या हेल्पफुल है। तो अभी तक मैंने जितने भी फार्मर है उसके खेत पे हर एक बार सीजन में जाता हूँ, देखने जाता हूँ मशीन। और फार्मर का फ्लो हमारे फैक्ट्री पे भी उतना रहता है। तो हम हर एक फार्मर को कंप्लीटली समझाते हैं, फील्ड पे जाते हैं, देखते हैं और पूरा नॉलेज देते हैं। इसलिए आज की डेट में हमारा मशीन हमारे नाम से बिक रहा है, एक हमारा ब्रांड हो गया। ठीक है। तो हमारा नाम से कस्टमर आते हैं और मशीन ले जाते जी। So Rama, how structured is the program, right? How does the GRIP program looks like? Because, uh, for example, innovators like Sanjay ji, right? They'll not understand all this tech jargons and all that, right? So for them, it has to be very simplified. Plus, you just have to help them to scale it faster, right? So their end objective is they'll build something. You want them to help with relevant stakeholders and all that. But program, when we talk about typical accelerator programs, it has involved a lot of tech elements in it, so it becomes very difficult for someone like Sanjay ji to understand all that. So how is your program structured? Is it very user friendly for Sanjay ji, for most of the rural innovators? How is it structured? Yeah, that's a right, very right question actually. So if we see like any kind of accelerator, there is like a timeline and like we have a structured program. So even for this GRIP, we have made a kind of accelerator program ka structure. But to put it very honest, it's not like as structured. It didn't go as planned. Like later, see, this is a very pilot project. We are also very new to this agri domain.
So we thought we would just hire a few startups and then we'll improve the technology. Then we'll connect with the distributors. Then we'll scale up the business. This was like the basic idea. But then there were many like things came in. Like when we started the project, then we got to understand there is seasonality things in the agri domain. There is rain. Rain is also a biggest factor for even do kind of do field testing. Also, there should not be the weather conditions are also playing a vital role. So these are all the things which we got to understand during the program, during the acceleration program. So though we have a structured plan for it, but then we got to understand there is a separate harvesting period, there is a separate transplanting period. So we can't just promote the machine if we just keep it ready by today and tomorrow we can just go into market and do the marketing, because there is a season, there is a transplanting season where just before 1-2 months, that is the right time for the marketing. We can't just go after the transplanting season or during the transplanting season, right? So these are all the learnings which we got to understand. So yeah, it was a 6-month structured program, like any accelerator. But then, yeah, these are the main, like majorly we have got a lot of factors, and because of which we had to change the plan somehow in between. Okay, that's great. संजय जी, मैंने और एक चीज सुनी है आपके बारे में। आप प्रेसिडेंट अवार्डी भी हो और जी इसके सर। बारे में हमने अभी तक बात नहीं की है, तो हाँ। वो कैसा रहा? आपने सोचा था कि आपको प्रेसिडेंट अवार्ड मिलेगा आपके इनोवेशन के लिए? सर मैं बताऊं तो मैंने कभी दिल्ली नहीं देखा था। ठीक है, जस्ट पहली बार इनायत में प्रोफेसर अनिल गुप्ता के साथ कांटेक्ट में 2010-11 से आया। तब 2013 मार्च में मुझे वहां से इनविटेशन मिला कि आपको दिल्ली आना है। मैंने बोला सर मैंने कभी दिल्ली देखा नहीं है। बोले आप अहमदाबाद आ जाइए, हम आपको साथ में ले जाएंगे। तब मैं उसके साथ ट्रेन में वहां पे गया दिल्ली, और मुझे राष्ट्रपति भवन ले जाया गया दूसरे दिन, और वहां पे पूरा एक फंक्शन था। तो वहां पे मुझे अलग एक बैठाया और बाद में बताया कि संजय भाई आपको प्रेसिडेंट अवार्ड मिलना है। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी थी। ठीक है, मुझे मालूम नहीं था कि मुझे प्रेसिडेंट अवार्ड मिलेगा। तो बाद में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने मुझे अवार्ड दिया, एक सर्टिफिकेट दिया और 1 लाख रुपए का एक गिफ्ट दिया। तो वो समझ लो वो उतना मेरा ब्रांडिंग हुआ उसके बाद कि हर एक मीडिया में, हर एक टीवी चैनल पे, हर एक जगह मेरा इंटरव्यू वगैरह सब आया। और नसीबदार ऐसा था सर कि नेक्स्ट अप्रैल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के यहाँ मेरे को 1 हफ्ता रहने के लिए वहाँ रेसिडेंट प्रोग्राम में मिला। तो मैं जस्ट लास्ट अप्रैल में राष्ट्रपति मुर्मू के जी के पास वहाँ पे 1 हफ्ता वहाँ पे राष्ट्रपति भवन में ही रहा हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। बड़ा अच्छा लगा ये चीज सुन के, क्योंकि बहुत सारे स्टार्टअप जो होते हैं वो ये चीज उनको कभी नहीं मिलती है, बट सही बात ग्रास है। रूट से शुरू करना, प्रेसिडेंट अवार्ड मिलना, ये काफी बड़ी बात है। इसके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। थैंक यू सर, थैंक यू। या सो Rama, right? You mentioned about the program structure. You also mentioned about the deliverables, that it is for 6 months, right? So, what are the other aspects in the program? Are there any kind of grant support? Are there any kind of any market access, dedicated market access? Yeah, as I mentioned, like, so SSC is like GRIPP is providing so wherever, so based on the requirement, as I mentioned, it's a case-to-case thing. So if there is a technological support needed, then we are providing the innovator or the grassroots entrepreneur with the technical support, technical expertise. If there is any kind of what to say, a business side, market side, if they want some distributor or dealership there, we are connecting with them with the distributors. And also not just finance or technical, we all not just technical support, we also providing the working capital, as I mentioned. So there is a kind of grant which we have assigned for each entrepreneurs through the project. So it was around like 15 lakhs grant amount which we have kept for each entrepreneur for the as working capital through GRIPP. Yeah. And so this is complete grant, right? You guys don't take any equity Yeah. or any sort of stake in it. Not really. No stake. No. I mean, this is a pilot project, right? As I mentioned. So Right. this is just we want to try to understand, like, do a pilot and understand what would be the best practices and what can be the failures. So it is basically this is a project SIC is doing to know how to understand the know-how process of entire grassroots innovation or rural innovation, in the perspective of rural innovation. So yeah. Right. That's a great initiative, though. Yeah. So संजय जी, आपसे और एक सवाल है मेरा। तो आपने बिजनेस बना लिया, अभी
ओके सर। मेरे हिसाब से होंगे आपके पास 25-30 एम्प्लॉइज, आप यूनिट सेटअप कर दिए हैं। तो अभी यस आपका सर। नेक्स्ट प्लान क्या है, आप नेक्स्ट क्या अचीव करना चाहते हो? हाँ सर, मेरा ऐसा गोल है कि मैं जहाँ पे ग्राउंड नट का फार्मिंग हो रहा है ना, वहाँ पे हर एक जगह हमारी मशीन होनी चाहिए। मेन रीजन हमारा दो मशीन है, जो हार्वेस्टर भी हमने डेवलप किया है। दो मशीन टोटल लेबर सॉल्यूशन का काम कर रहे हैं, और जो क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट अभी आ रहा है, ठीक है, उसमें भी काफी सारा वो दोनों हेल्प कर रहा है, क्योंकि जो फास्ट वर्किंग होगा, नाइट को वर्क करना है तो नाइट को भी कर सकेंगे। तो दोनों मशीन के हिसाब से फार्मर का जो इनकम इंक्रीज होगा, वो हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब बोल रहे हैं कि फार्मर का इनकम जो डबल करना है, तो वो डबल करने में हमारा दोनों मशीन बहुत हेल्पफुल रहेगा और वो काम आएगा। जी, आई मीन फार्मर तो बैकबोन है कंट्री के, हाँ। और जब आपके जैसे इनोवेशंस बाहर निकलते हैं तो फार्मर्स को और ज़्यादा सपोर्ट होता है, राइट? तो इसके अलावा अभी आपने जो मशीन बना दी है, ये पीस हो गया, तो इसमें आपका जो फैमिली सपोर्ट है वो भी इन्वॉल्व है ये बिजनेस में, या सिर्फ आप ही देखते हो? मेरा बड़े भाई भी साथ में है, और मेरा एक भांजा चिंतन करके है। हम तीन लोग साथ में है, तीनों मिलकर काम करते हैं सर। और नेक्स्ट प्लान, आपके हर एक जगह जहाँ जहाँ ग्राउंडनट का ये रिक्वायरमेंट है आप सब जगह इम्प्लाई करना चाहते हो, बट इसके हाँ अलावा सब और कुछ मशीनरीज है जो आप बनाना चाहते हो ग्राउंडनट छोड़ के? एक मशीन का चल रहा है मेरा, सोल्ट हार्वेस्टिंग वाला। ठीक है, वो अभी अंडर ट्रायल पे है। और ग्राउंड नट में भी और एक मशीन की अभी रिक्वायरमेंट है, उसके लिए भी मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ। तो टोटल जहाँ से ग्राउंड नट हार्वेस्टिंग का स्टार्ट होगा, तो पूरा क्लीन तक एक से तीन मशीन में काम हो जाएगा। जी। So Rama, how do you envision a future of this grassroots innovation program? So right now your cohort or size of startup was just 6 startups. I mean 6 innovators, right? Sorry for using that startup term, right? So how do you see that? Like, what's your next thing? You want to increase the cohort size? You want to have more innovators? What is the future projection for SIC? Yes, yes. So basically, the project GRIPP has served as a trial for us, like for it as a trial in terms of learning and accumulating the best practices in the rural innovation through the real world experience which we have gained. So now we want to take this project forward for sure, but not just grassroots entrepreneurs. We want to keep enhance this project by involving other social entrepreneurs as well in the next cohort. So not just in the agri domain, because we were specifically the first cohort, as I mentioned, was consigned to the agri domain. But in the next coming cohorts, maybe we want to also involve the social entrepreneurs, and we want to enhance the project in a big scale. Yeah. Great. संजय जी, जी। आपके आउटकम्स और आपके लर्निंग्स क्या रहे हैं ये प्रोग्राम से, ग्रिप के साथ जुड़ने के बाद? ऐसे कुछ चीजें जो आपने कभी पहले सुनी नहीं हो, ना ही सीखी हो, तो आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा प्रोग्राम से? सर, मुझे कभी स्टार्टअप क्या, एंटरप्रेन्योर क्या और क्या वो आगे का कुछ मालूम नहीं था। ठीक है, जब से सुजुकी इनोवेशन के साथ जुड़ा हूँ, तो मेरा एक स्टार्टअप कंपनी भी हमने प्राइवेट लिमिटेड बनाया है, जो स्टार्टअप में डीकेआईटी के अंडर रजिस्ट्रेशन भी हो गया है। ठीक है, और मैं एसआईसी के रमा मैम और तीसा मैम के साथ आपके टीएफ भी आ चुका हूँ। ठीक है, और एसआईसी के साथ अभी मैं स्टार्ट हुआ हूँ, तो मुझे वहां से 15 लाख तक का ग्रांट भी मिला है, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर का कॉन्ट्रैक्ट भी मिला है। ठीक है, और मेरा ट्रैक्टर के साथ और महिंद्रा फाइनेंस के साथ हमारा टाइप भी करवाया है। तो वैसे बहुत सारी हेल्प मुझे एसआईसी से भी मिला है। तो अब मुझे पता चला है कि हम स्टार्टअप करके आगे हमारी कंपनी बना के हम आगे ले जा सकते हैं। वो गोल अभी एसआईसी मेरे साथ में है, तो हम आगे जा सकते हैं और बहुत बड़ा काम हो जाएगा। आपने कभी ऐसे ग्लोबल जाने का सोचा कि मेरे मशीन सिर्फ इंडिया में नहीं, मुझे हर जगह देनी है? हाँ, परफेक्टली सर। मैंने आगे करीबन हमारा 40-50 मशीन आउट ऑफ इंडिया में है, और अभी भी मैं ये बड़ा काम कर सकता हूँ। अब एसआईसी मेरे साथ में है, तो हम इसको बड़ा आगे ग्लोबल लेवल पे ले जाएंगे। कौन से कंट्रीज आप टैप कर रहे हो फिलहाल में? अभी म्यांमार में भी हमारा मशीन स्टार्टिंग लेवल पे मैंने दिया है, सूडान दिया है, बाद में गाम्बिया, सेनेगल, श्रीलंका, पोर्टुगल, हर एक जगह हमारा मशीन चल रहा है। तो मेरे हिसाब से काफी सारी ग्राउंड नट आउट ऑफ कंट्री में वैसे हो रहा है, तो हम वहाँ पे मशीन सप्लाई कर सकते हैं। काफी इंटरेस्टिंग है ये, कि एक जूनागढ़ के छोटे से गांव से आप ग्लोबली हर जगह मशीन सप्लाई कर रहे हो, तो काफी बड़ी बात है ये। सो रमा, व्हाट आर दी अदर activities or other initiatives lined up for SIC? Yeah. So as I mentioned, GRIP is one of the lineup activities for rural innovation. So not just GRIP, we also have rural supply chain project with SIC. So this program, the major objective of the rural supply chain project is to make the villagers to avail the FMCGs, the regular FMCG goods, to to bring the FMCG goods to the door delivery.
So we are also trying to, so whatever we essentially basically trying to find out the problems, figure out the problems lying in the rural areas, and accordingly we are coming up with new projects. And also we want to keep the projects for a short span of time, basically to understand the know-how of the entire process, and then do multiple projects in agile process, not just sticking to one or two particular projects. We want to like do as many projects as possible in agile way, and to solve which can help the find some solution for the rural problems in India. ग्रेट। संजय जी, अगर समझो आपके जैसे ही और बहुत सारे लोग हैं जो कहीं पे जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, बट उनको ऐसे स्टार्ट करने मतलब काफी हिचकिचाते हैं, जैसे कुछ शुरू करना है तो वो 10 बार सोचेंगे, तो उनके लिए आपका क्या एडवाइस रहेगा? आप क्या कहना चाहते हो उनके लिए? सर मैं तो कह रहा हूँ कि ऐसा करना ही चाहिए, मैंने जो काम किया है, बट पहले से आपका माइंड को स्ट्रोंग रखना है, ठीक है। इसमें वो बोलते हैं ना, आगे पीछे तो जाने वाला ही है, कभी ऊपर जाएंगे कभी नीचे आएंगे, बट नीचे आने से अगर हम पीछे चले जाएंगे तो आगे नहीं बढ़ेगा। उसके लिए हमें कंपलसरी दौड़ना है, मेहनत करनी है, स्ट्रगल करनी है, और पूरा जोश के साथ, ठीक है, हिम्मत भर ये काम करेंगे तो ही ये पूरा काम हो सकता है, बाकी नहीं हो सकता है। इसमें ये एक बिजनेस है सर, ऐसा तो नहीं है कि चलो शाम को 6 बजे जॉब खत्म हम घर पे चले जाएंगे। इसमें रात को 12 बजे भी रहना पड़ता है, 2 बजे भी रहना पड़ता है, बट वो हमारा एक मन में होना चाहिए तो हम कर सकते हैं, 100% ये काम हो सकता है। जी जी। सो रमा, let's say if you have to talk about Sanjay ji, right? Because you have worked with him for last 6 months. So how different is he? I can like say very proudly that even out of the six startups which we have chosen, Sanjay ji is among us, like being the best of all of them, like one of the best among all of them, because he always comes up with the requirement. So most of the times, these grassroots innovators, right, grassroots entrepreneurs, they have little hesitation to ask questions or to come up with their problems. But in case of Sanjay ji, he keeps like he keeps very straight about what his requirement is and what he's expecting from us. So that makes our job also easy. Like we'll understand his requirement, and accordingly we can plan the activities, right? So in that way, Sanjay ji is like more competent in terms of he knows his requirement. Basically, he wanted to expand his business in South India. That was his major ask. So he could understand his ask. He could understand his requirements, and he's also like so much entrepreneur. He has like a lot of entrepreneurial nature by himself, and that is what keeps him like different from most of the innovators which we have seen, especially in terms of grassroots entrepreneurs, right? So I could say this because we have interviewed 20 plus innovators, and most of them has the innovation kind of, they have innovation, the technical side, they have the innovation mindset, but they don't have, most of them were lacking with the entrepreneurial mindset, but Sanjay ji has both, so that's his advantage. Yes, absolutely. Because a lot of founders feel that whatever they are building is great, right? And they eventually don't tend to listen if you're trying to advise something, or let's say if any mentor is trying to guide them on certain things, right? Great. Let's say if they are rural innovators, they want to reach out to GRIPP. How do they do that? What's the procedure? How is it? As I mentioned, SSC is like a very open platform. Any grassroots entrepreneur can reach us directly through our website. SSC has a website also. So there we have mentioned few emails as well. So any grassroots entrepreneur with a very good product, with a market ready product, it would be more better. So with any market ready product and like with an entrepreneurial mindset specifically, can reach out to us very directly. Yeah. ग्रेट, थैंक्स रमा। संजय जी, एक लास्ट सवाल है मेरा। आपका जो फ्यूचर प्रोजेक्शन है, आपने उसके बारे में तो बात कर दिया है, फिर उसके अलावा आपने बहुत सारी चीजें कवर की, राइट फ्रॉम मशीनरीज बिल्ड करना। सिर्फ अगर 3 शब्द आपको कहने हैं कि ओवरऑल आपका लर्निंग कैसा रहा है, ओवरऑल आपकी जर्नी के बारे में, कि ऐसे 3 चीजें जो आपने सोची थी कभी नहीं होंगी और आपने वो कर ली है। सर ये तो एक तो पहला मेरा प्रेसिडेंट अवार्ड, ठीक है, कि 2 बार मैं राष्ट्रपति भवन जा चुका हूँ, राष्ट्रपति का मेहमान भी बन चुका हूँ, ये कभी लाइफ में सोचा नहीं था। और सेकंड, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा खुद का फैक्ट्री होगा, इतना बड़ा फैक्ट्री होगा, और मैं राजकोट सिटी जो बहुत अफोर्डेबल सिटी है और यहाँ पे रहना थोड़ा मुश्किल भी है, तो राजकोट सिटी में आज मेरा खुद का फैक्ट्री है सर, और करीबन एक बड़ा 2000 स्क्वायर मीटर का खुद का फैक्ट्री, तो ये भी एक बहुत बड़ा गर्व की बात है। तो मेरे पापा भी मेरे पर गर्व कर रहे हैं, ठीक है। तो आज फैमिली में भी अच्छा मेरा सब मान सम्मान और
अच्छा रहता है, तो ये मुझे बहुत बड़ी खुशी होती है कि जो हमने सोचा नहीं था वो हम यहाँ तक पहुंच गए। जी बिल्कुल, मतलब अगर घर वाले आप जो कर रहे हो उससे खुश है तो बस, और बाकी सारी हाँ, चीजें तो अपने आप आ जाती हैं। आ जाती है धन्यवाद सब। संजय जी, थैंक थैंक यू यू सर। सो मच रमा. So I just want to highlight this, right? So let's say if innovator like Sanjay, who can just quit his job and build this company by selling almost 1,000 products in various countries right now, right? So I think any rural innovator who has an idea, or any individual who has an idea wants to do something at grassroots, I think GRIPP is one platform wherein they can reach out to and they can scale it up. And at T Hub also, we are very committed at supporting innovation at every level. So with this, I think we'll conclude it. So thank you so much, Rama, for your time. धन्यवाद संजय जी, आपकी जर्नी थैंक के यू। बारे में सुन के बहुत अच्छा लगा. आप काफी लोगों को इंस्पायर कर रहे हो, ऐसे ही करते रहना. थैंक यू. थैंक यू। थैंक यू सो Much, मच। Neha, for hosting us. Thanks a lot to T-Hub as well, because T-Hub is also one of our partners with SIC, and they're also providing when and where the support is required. So thanks to T-Hub, thanks to Gajendra, thanks for Thank you so hosting us. much. Thank you. Thank you.